Good morning, dear children. We have completed lesson 5 Animals Around Us. Today, we are going to revise this chapter through the pictures. हम इस स्लाइड्स में पिक्चर्स के थ्रू जो भी हमने अब तक इस चैप्टर में पढ़ा है उसे हम आज रिवाइज करेंगे. So get ready for it. As you know, there are many kinds of animals around us. Some are very big and some are tiny. They live in different places and eat different kinds of food. So, animals are basically of two types: wild animals and domestic animals. Wild animals live in forests. आपको फॉरेस्ट का मीनिंग पता है ना? जंगल. जंगल और फॉरेस्ट मीन्स अ बिग लैंड दैट कवर्स विथ मैनी ट्रीज. यू कैन सी इन द पिक्चर. मैम ने फॉरेस्ट की पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई है. द एनिमल्स विच लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड wild animals. Elephant, fox, deer, that's seen on the slide. They are wild animals. There are number of animals that live in the forest. Forest में बहुत सारे animals रहते हैं. इतने सारे कि कुछ animals तो हम देख भी नहीं पाते हैं. को कहाँ छुपे रहते हैं पेड़ों में अंदर. Wild animals can be dangerous to us. They are not friendly. We need to make distance from them. Some animals are tame. They are friendly. They live with us. They work for us. We keep them in farms. That's why they are called as farm animals. You can see in the picture. Look at the screen carefully. We can see buffalo, hen, horse. They all are domestic animals. They are called domestic. Domestic animals, that animals can live with us. इन्हें farm animals भी बोलते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स भी बोलते हैं क्योंकि इन्हें हम अपने साथ फार्म में रखते हैं. दे आर वेरी हेल्पफुल टू अस. अपार्ट देन दीज देयर आर मोर एनिमल्स दैट दे आर फ्रेंडली टू अस. दे ऑल आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. सी दैट एनिमल्स चाहे वो वाइल्ड हो या डोमेस्टिक, दे लिव ऑन 3 different places. They live on land, they live in water, and some live both on land and in water. Means कुछ animals land पे रहते हैं, इनमें से कुछ animals water में रहते हैं और कुछ animals ऐसे हैं जो land के साथ साथ water में भी रह सकते हैं. Most of the animals on the earth live on land. ज़्यादातर animals जो हैं वो land पे रहते हैं. Look at the pictures and try to identify them. Yes, they are sheep, horse, elephant, goat, tiger, dog, hen. इनमें से कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं और कुछ डोमेस्टिक, बट दे लिव ऑन लैंड. सम एनिमल्स लिव इन वाटर. नाउ आइडेंटिफाई द इमेजेस ऑफ एनिमल्स ऑन द स्क्रीन. यस, फर्स्ट वन इज octopus. This creature has 8 legs. This is water animal. It lives in water और इसके 8 legs होते हैं. Next is fish. आपको पता है ना कि हम में से बहुत सारे लोग फिश को पेट बना लेते हैं, उसको एक्वेरियम में रखते हैं, उनको घर में
पालते हैं। पेट एनिमल मीन्स द एनिमल विच वी कीप देम विद अस। पेट एनिमल्स कौन होते हैं? जिनको हम अपने घर में अपने साथ रख सकते हैं, उन्हें हम पेट कहते हैं। दे कीप अस हैप्पी। डॉग, कैट, पैरट, fish, they can be kept at home as pet. We can see in the picture starfish. It looks like a star. And the next one is dolphin. They all are water animals. Some animals can live on land and in water as well. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी। वो अगर पानी से बाहर आते हैं तो मछली की तरह मरते नहीं हैं। फिश तो पानी से बाहर आती है तो मर जाती है ना, बिकॉज इट कैन नॉट लिव ऑन लैंड। वो लैंड पर भी आसानी से रह लेते हैं। जो पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये एनिमल्स लैंड पे भी रह लेते हैं और वाटर में भी, लाइक क्रोकोडाइल, फ्रॉग, tortoise, hippopotamus. They can live on land and in water. They can live both the places. हमने इस चैप्टर में बर्ड्स के बारे में भी पढ़ा है। There are many kinds of birds. They have feathers and wings. They eat with the help of their beak. You can see the main parts of their body on the screen. Beak, the way we eat our food through our mouth and chew food with our teeth. In the same way, birds have beak to have their food. Beak help them to eat food. They do not have teeth. And now look at the legs. Birds के leg देखो. You can see that they have two legs and each legs have claw attached with it that helps birds to walk and run. In the same way that we have foot, we have feet, na? We have feet. We have 2 feet. In the same way birds have claws. And birds' wings help them to fly. They have one tail. They're all body parts covered with feathers. Most of the birds fly. They fly with the help of their wings. You know, there are some birds that cannot fly. Birds are small animals, but few birds are big in size. They cannot fly, like ostrich, penguin, kiwi. They can only walk and run. There are some birds that live in water. Penguins, ducks and swans. They live in water. So they are water animals. So some birds are there that live in water. We have learnt that some animals are very big and some are tiny. Tiny means very small. Insects are very small living things. You can see them in your garden. In the screen, we can see red ant, butterfly, dragonfly, housefly, honeybee, mosquito and termite. Some insects can fly, but some are not. Do you know the fact about ants? हम में से किसी ने भी एंट को फ्लाई करते नहीं देखा है ना। जनरली हमें एंट फ्लाई करते हुए नहीं दिखते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज सम एंट्स कैन फ्लाई एंड सम कैन नॉट. During their life cycle, in particular season, on their body, their wings develop and they can fly. But some
ants do not have wings and they do not fly. As you can see in the picture, there is red ant, and red ant do not have wings. It cannot fly. So some insects can fly, they have wings to fly, and some insects do not have wings, they cannot fly. Now it's time to check your progress. मैम ने आपको पूरा लेसन पढ़ाया, हमने रीड भी किया और आज हमने कलरफुल पिक्चर्स की हेल्प से रिवाइज भी कर लिया. नाउ you be ready with your pencil and book. On the page number 41, you will find this exercise. पेज नंबर 41 पे अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे. आपको क्या करना है? You need to read each sentence and put tick mark if you find the statement is right. स्टेटमेंट को पढ़ना है, सेंटेंस को रीड करना है और ये समझना है कि वो सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग. राइट है तो टिक मार्क, राइट वाला मार्क, और गलत है तो क्रॉस, रॉन्ग वाला मार्क. ठीक है, सो लेट्स डू दिस. ए, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई. अभी मैम ने आपको बर्ड्स की पिक्चर्स दिखाई थी और आपको बताया था सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई. सो यू नीड टू चेक ostrich can fly or not. Ostrich cannot fly. This statement is right. So what you need to do? Put a tick mark on that. B, duck cannot swim. You know duck is a water animal. It can swim. So this statement is wrong. So what you need to do? Put a cross mark in the box. Now see, termite can fly. You know some insects can fly and some cannot. And termite do not have wings. So this statement is wrong. It cannot fly. So put a cross mark in the box. Now D, some animals have babies. Now you need to see some animals have babies or all the animals have babies. What is the correct statement? All the animals have baby, and in our book it is written some animals have babies. So this statement is wrong. Put a cross mark. Number E, all animals live in forest. सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं? नो, सम एनिमल्स लिव विद अस आल्सो. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द सेंटेंस इन द बॉक्स. नाउ you can check your answers. Only number A is correct. Rest all are incorrect. So check your answers one more time and move ahead. Animals are our friends. We need to be kind with them. We should treat them with love and care. We should not hurt them. So whenever you see hungry animals around you, we need to feed them. Look at the screen, what message ma'am has written on the screen. Whenever you see hungry animals, feed them. जब भी हमारे घर के आसपास हमें cows, squirrels, dog, cat, we can see them around us na. So whenever you see them, offer them food. And even you can keep bowls filled with water and grains for the birds in your balcony, in your verandas. So try to feed them. And one more thing it is written over here, protect them from violence. Protect means क्या करना है हमें उन्हें
बचाना है, हमें उन्हें सेव करना है। अब जब भी हम देखेंगे कि कोई उन एनिमल्स को हार्म कर रहा है तो क्या करना है हमें? वी नीड टू ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। सो एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, वी नीड टू बी वेरी काइंड विद देम and we need to save them. Stay safe, stay happy, be cheerful and keep learning.